of uncertainty. Everyone is in unfamiliar territory today, like landing in a city where GPS is not working and you don't have a map either. You look at the sky and a voice resounds, use the other GPS. And that, ladies and gentlemen, is the Guru positioning system. And who is the Guru? Who has been in this town a little longer than all of us, who has solved a little more crisis than all of us. Here at Vinyl India 2026, you can activate your Guru positioning system and latch on to the veterans who know a little bit more and who will guide you with their light at the end of the tunnel. Vinyl India 2026 has many Gurus from across the world to do just that for all of us. Hopefully, over the next 2 days, the collective wisdom of the global experts and veterans can prepare us to face the reality of today better. But first, allow me to submit humbly to each one of you that it's only your love, your encouragement, your patronage, your loyalty, which give us the courage and faith to put up this edition in the current extremely volatile scenario. On behalf of the Elite Plus team, I, Nidhi Varma, am grateful and hugely privileged to stand here in front of all of you. Pranam, Abhar, Naman. I'm truly delighted and heartily warmly welcome you to the 13th episode of Vinyl India. I'll not miss it. And covering the entire PVC sector from India through the rest of the world. And with the current prevailing circumstances and situations around the world, I think it's the most appropriate time for the speakers to cover this subject, and a very relevant subject, and particularly in India, if we are to see, and we've been running deficit all these years as far as the PVC supply-demand situation is concerned, and we've been relying on imports, and thanks to Reliance and Adani, we're putting up the capacities, and even with those capacities coming up in next 1.5 years, still we are going to stay deficit in PVC. But let's actually hear from the eminent speakers today. Calling upon first Mr. Vinu Mehta, if you can come over and speak on the Indian. All participating delegates from India and global, to all the industry leaders, my fellow colleagues from the industry, trade partners, organizers of the event, session chairman Mr. B. Narayan from Reliance, and Mr. Sanjay Murji from Tricon Energy. Thanks Nidhi for the opportunity for being part of this 13th Vinyl India conference, and indeed a great privilege to be speaking on the subject of PVC outlook in India 2026 and beyond. To be honest, I am not too sure presenting the PVC outlook beyond 2026, as 25-26 itself has been a very, very difficult year for the PVC manufacturing industry.
and on the chip platform. First of all, we would like to congratulate, and I hope you will like to join me, the winner in that team, especially Nidhi Verma, for consistently organizing such an outstanding event over the year, elevating the conference to truly global platform. Standing here today, we speak as someone who has spent a lifetime in this industry, learning, experimenting, facing challenges, and growing along with it. For me, plastic advertising business, there is a journey. When we look back, we often reflect on how it all began. Many years ago, I read the words of Carl Sagan, somewhere, something incredible is waiting to be known. The story of PVC, it was such a story. It is a story of vision, perseverance, and discovery. For nearly 90 years after his broader lens, not only in vinyls or PVC, but the broader lens. So before I jump into the details, I'd like to actually give the three messages that I'd like to, I'd like you to take with you after this presentation. So the first one is the AI moment that we're going through is structural. It is not anything like the ones that we had before. It is changing the way that we work, and 3, 4, 5 years down the road, when we look back, we'll see how impactful it has been to the way that we work. So that is number one. Number two, chemicals as a sector is a bit behind than some other sectors in the adoption and creating value out of AI. But that also means that there is a lot of potential to be captured for especially the ones that can tap into the right resources. And the third message that I'd like to give is that the challenge to get the value out of AI is not necessarily technology-based, but it's more around how you actually rewire your organization, how you ensure adoption by your people, and how you ensure change management to get and capture the value of AI in their businesses. So what I'd like to do in terms of the agenda, the presentation is going to come, I think, in a bit. So I'd like to actually talk about three things. First, how AI is actually developing in the latest developments. The second is the value of AI in chemicals and where it is. And the third one, what it takes to scale impact. So AI has been with us for 60 years, as you say. So it starts with rule-based logic, it goes into machine learning, using numerical AI, then goes into generative AI, which actually is sped up in the last couple of years. And now what we're talking is agentic AI, which are agents that are taking actions without any prompt and helping us do our work better. So this is what is pretty much rewiring how the organizations are working. And in terms of impact in different... What does it all mean for manufacturing, the fragmented geopolitics and interconnectedness of the world, and this simultaneously playing out? So let me start by saying that after the pandemic, I think pandemic has been referred to several times. After the pandemic, we have positively surprised on the growth. I think every forecast that was made for the Indian economy, actually the numbers came out much faster, higher than that. And now the belief is that 7% is India's potential. Potential, as economists, I think when we talk of potential, we talk of growth rate which can be sustained without generating inflation. So 7%, earlier the estimate was around 6.5%. That's from the official sources, and our assessment is also something similar. In what's going to happen in FY27, which is the fiscal year we just started, we have a backdrop of 7.6% growth last year, which is probably the highest in the world. Now, where the growth will settle, I think there's too much fog to be able to forecast any number at this juncture, but clearly it's going to be lower. Yesterday RBI talked about 6.9%. There's a big range, and all of them depend on what is going to be the oil price, what is going to be the intensity of the conflict that is playing out. All those things have a role to play there. So I will try to make some sense of that. I think I wanted to focus on this chart, which is a very
useful chart if you want to look beyond what's going on currently and also look at simultaneously what's going on currently. So there are two sets of lines that you see. On top you see the dots that you see are GDP growth rate. That is for over a period of 45 years. And on the bottom, again, I think the yellow dots are also GDP growth rate. The top one is for India, the bottom one is for advanced countries as a group. You also see straight lines passing through the up and down of growth rate. Those are the long-term trajectory of the economy. Where is the economy moving? So I think a couple of observations from this slide. One, I think India has got extremely interconnected with the world economy, even in terms of its GDP growth. You can see that the growth cycles are synchronized. The movement around the trend is very synchronized for the last 20 years because we trade more, the finance linkages are. Friends, Mahavirji spoke about that potential is quite a lot in India, but actual growth in recent past has not really been commensurate to that potential. When we speak about the potential in India, and agriculture is one of the largest applications, and Indian farmers, there are 120 million farmers, they do agriculture in 140 million hectares of land. And almost about 45% of that land is still not irrigated. That means those farmers rely on the rains, and which are also patchy. Due to the climate change, the rains come, the seasons are changing, the quantity of rains keep changing. And these farmers need a reliable source of, let's say, irrigation to be able to do farming properly. And this is approximately about, I would say, at least somewhere between 40 to 50 million hectares of new land which needs to be irrigated. And that is one single big factor which would continue to create demand for the PVC pipes in India. Now, how that's going to happen? Government of India has identified approximately 30 river linking projects. In stage one of these river linking projects, there is more construction in terms of canals or dams, etc., etc. But then once that has happened, then distribution happens, and that's where the PVC, polyethylene pipes, especially PVC, will come in, because one a project which was recently identified by government in UP and MP alone is about 45,000 crore rupees of investment, and it will bring approximately 10 lakh hectares of area under irrigation. That means that much of more demand for PVC. Like that, there are total 30 projects have been identified. Now this is, this river linking project is a major infrastructure project, so it will take time. The first project. Every industry policymaker, corporate leader, or even a normal citizen, buckle up and recalibrate. Everyone is facing a stress test. Our evolved response to the current situation will require a clear-eyed diagnosis and structural modifications that are more resilient, diversified, and capable to bounce back faster. Each shock needs to be treated as an opportunity to build an economy and industry, a company resilient enough to absorb the next shock before it arrives. The agility of the response could likely determine the duration of our pain. The dust may settle very down, and ultimately the decisions conducive to the overall growth of economy will prevail. As they say, never waste a crisis. They also say the best time to come together is when the world is most uncertain. That makes this 13th Vinay India the most aptly timed event as the first industry gathering in the current geopolitical scenario. Disruption has happened across the entire economic systems, and fundamentally the momentum has been jolted. All of us have been jolted. But the real challenge is not only the damage we witness today, it is the unpredictability of what is going to come next. The entrepreneur has absorbed the shock, the investor has recalibrated the risk, and business, after years of disciplined effort, has been pushed back by years. Supply chains fractured, raw material flows uncertain, logistics weakened, manpower shifted, energy prices surged, currencies reacted, and a silent but powerful force
has emerged. The fear-driven hesitation. Navigation today, business environment feels like reading a rule book that changes every morning. And I'm not taking any names here. As a result, we are witnessing a decisive shift toward self-reliance, localized manufacturing, and strategic independence. And not so long ago, ladies and gentlemen, did not we make these decisions during COVID? But now they have been reinforced and mandatory. Within this disruption has a critical counterface, opportunity. History has shown that reconstruction follows destruction. Damaged regions become zones of accelerated investment. Infrastructure is rebuilt, industries are re-established. Yes, the allocations of opportunities may not always be based on merit, but the underlying truth remains. Consumption will happen, production will follow, and industries will evolve. This is the paradox, time and over again. War destroys value, but it also triggers cycles of rebuilding and reinvention. As we stop, we take a step back, we recalibrate, and go forward with more momentum. It brings to us a single critical responsibility: continuity with clarity. We must not pause, we must not retreat, we must not adapt, we must collaborate and lean forward. And this precisely why platforms like Vinyl India are not optional, they are essential. Because today more than ever, progress will not come from isolation. It will come from collective intelligence, shared insight, and collaborative innovation. No single company, no single country, and no single segment can do it now. It requires collective thinking, shared responsibility, and collaborative action. And that is what Vinyl India brings to the PVC industry. It is about aligning industry direction and global realities. It is identifying scalable applications, next-gen materials. And ये हमारा 13th एडिशन है. हर साल करते आए हैं इसको. बीच में कोविड की वजह से आई थिंक 3 साल का गैप आ गया था 2021-22 में. नहीं तो ये शुरू से आई थिंक 2011 से ये लोग ये विनाइल इंडिया हो रहा है. और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है ये पीवीसी का. सो अगर आप आज देखेंगे तो 21 कंट्रीज के लीडर्स आए हैं. जबकि आप ये देखिए, हम परसों तक हमें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है. अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन इतना जियोपॉलिटिकल इतना प्रॉब्लम हो रहा था. लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, वीजाज नहीं लग रहे हैं. देन ऑल्सो 21 कंट्रीज लीडर्स हैव कम, विच इज़ लाइक, इसका मतलब ये इतना ज़रूरी होगा कि उनको उनको जो लीडर्स को इधर आना, क्योंकि विनाइल इंडिया का इतना महत्व है कि जितना वर्ल्ड में अगर आप पीवीसी में कहीं पर भी हैं तो विनाइल इंडिया में आपको आना ही आना है. और अगर आप पूरा पॉलीमर इंडस्ट्री देखते हैं, पीवीसी उसका बहुत बड़ा पार्ट नहीं है. एक नीश बोलते हैं ना जिसको, बहुत नीश प्रोडक्ट है ये. तो लेकिन इतना महत्व इसका इतना ज़्यादा है कि कोई भी विनाइल इंडिया को छोड़ता नहीं है. तो हमें ये वाला करने में थोड़ी जद्दोजहद हुई, बिकॉज हमें मालूम नहीं था कि लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे. कुछ हो गया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती पॉलिटिकल एंगल से. तो बट फिर भी हमने, अगर आपने मैंने जो सुबह बोला किसी ने सुना होगा, तो हमने ये कन्विक्शन लेके किया कि नहीं, हम हर साल करते हैं, चाहे लोग कम आए तो भी हमें करना चाहिए. बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल में, पिछले साल और इस साल के अंतर में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस प्रोडक्ट में, वो विनाइल इंडिया सारी दुनिया के सामने लाता है. तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि जो हमने इतना अपना ट्रस्ट रखा. आई थिंक 1150 पीपल हैव कम, विच इज़ अ ह्यूज नंबर. और ये पहला इंडस्ट्री इवेंट है शायद, ये जो वॉर जब से हुआ है पिछले 5-6 हफ्ते से, और कोई इंडस्ट्री इवेंट हुआ नहीं है, सब कैंसिल हो गए हैं. तो आई थिंक अगर आप देखें तो पूरा फुल हाउस है. सो लोगों को इसके बारे में जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई, अगर आपने अभी प्रेजेंटेशन कुछ सुनी होंगी, पूरा ट्रेड डायनेमिक्स चेंज हो रहा है. क्योंकि इंडिया में जो पीवीसी है वो बनता इतना कम है. रिलायंस बनाता है, डीसीडब्ल्यू बनाता है, डीसीएम श्रीराम बनाता है, केमप्लास्ट बनाता है. बाकी कोई कंपनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है, बाकी सारा इंपोर्ट होता है. 4.8 मिलियन मीट्रिक टन का टोटल डिमांड है मार्केट में, और बनता सिर्फ 2 मिलियन मीट्रिक टन है इतनी बड़ी कंपनी से. अभी ऑफ कोर्स अदानी और रिलायंस का आएगा, अगले 2 साल बाद आएगा. सारा इंपोर्ट होता है. अब अगर सारा इंपोर्ट होता तो वो जो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो बंद पड़ा है, तो कहाँ से आएगा आप देखिए. तो काफ़ी दिक्कत हुई है. प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड तो बंद नहीं होगी. और अभी ये टाइम होता है क्योंकि एग्री में बहुत यूज़ होता है ना पाइप्स में. सो सब फार्मर्स को, सबको वो पाइप्स डालनी होती हैं, अपनी एग्री प्रोडक्ट्स में होती हैं. सो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे पीछे. बट अभी गवर्नमेंट ने आई थिंक
पिछले कुछ 10 दिन पहले उन्होंने ये किया कि जितना इम्पोर्ट ड्यूटी है वो ज़ीरो कर दिया 2 महीने के लिए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सब लोग। उससे फिर अभी थोड़ा मतलब पीपल हैव बीन एबल टू कम बैक टू द नॉर्मल प्रैक्टिस। मैम आपने बताया कि 21 पीवीसी की बात करें तो हर साल जब भी इवेंट होता है नई मैन्युफैक्चरर कंपनियां जुड़ती हैं बार की बात करें तो इस ईयर जो है कितनी कंपनी आपसे मर्ज हुई है? अभी टोटल हमारी कंपनीज आज की डेट में हम जैसे हर रोज हमारा एक अगर किसी ने देखा होगा तो हमारा एक सोशल मीडिया का अकाउंट रहता है। हम हर रोज एक पोस्ट डालते हैं विनाइल इंडिया की। तो कल शाम तक हमारी 515 कंपनीज रजिस्टर करी हैं। 515 कंपनीज के 1150 लोग रजिस्टर किए हैं। 22 कंट्रीज हैं, 22 सॉरी माय मिस्टेक, क्या 21 कंट्रीज हैं। कल रात को नेपाल आया है, नहीं तो 20 थे। कल रात को नेपाल ने एक डेलीगेट ने रजिस्टर किया है। इसमें से अगर आप नहीं बोले ना साहब, सो आई एम नॉट सो श्योर, बट आई थिंक पार्टनर्स हमारे कुछ 12 पार्टनर जो जो लोग हैं जिसके लोगोज लगते हैं ना, जो पार्टनरशिप लेते हैं, वो नई कंपनीज 12 आई हैं। डेलीगेट्स में मुझे देख के बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कितनी नई आई हैं। लेकिन ये जो आपका आपका फ्लोरिंग देखा है आपने आजकल, अगर आपने जैसे हॉस्पिटल्स में फ्लोरिंग होती है, आपके जो नई नई बिल्डिंग्स आती हैं उसकी फ्लोरिंग होती है, वो सब पीवीसी की होती है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आपका जो डोर्स एंड विंडोज होता है वो साउंड प्रूफ होता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसकी वो बहुत ज़्यादा हेवल्स कंपनी है या सिंटेक्स है, ये सब लोग इसका फायर का बहुत ज़्यादा आगे रहता है कि बहुत ऊपर टेम्परेचर्स तक भी वो फायर को कैच नहीं करता है। फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की। इसकी वजह से इसकी क्वालिटीज इतनी ज़्यादा हैं। तो जितनी आपकी केबल्स है ना, अगर आपने देखा इस साल डेटा डेटा केबल्स कितनी ज़्यादा जा रही हैं, बिकॉज सब लोग अपने डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और पूरे इंडिया में बना रहे हैं। आपने देखा बाहर की जितनी कंपनीज है, गूगल है, ये जो हैदराबाद, सिकंदराबाद, बैंगलोर, इसमें डेटा सेंटर्स कितने ज़्यादा रहे, उसमें सब केबल्स पीवीसी की होती हैं, क्योंकि उसमें फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको वंडर प्रोडक्ट बोलते हैं पीवीसी। इतना ज़्यादा ग्रोथ है इसका, 10% से ऊपर ग्रोथ है। और मुझे नहीं मालूम है किस इंडस्ट्री में 10% ग्रोथ है आज की डेट में। सब लोग थोड़ा अपना धीमे से पैसा खर्च रहे हैं ना आजकल। पीपल आर नॉट स्पेंडिंग, दे आर काइंड ऑफ बीइंग अ लिटिल कंजर्वेटिव। पर ये प्रोडक्ट ही इतना ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट, इतना डिमांड है, इतना डिमांड है कि सब इम्पोर्ट होता है। आपसे दो सोचिए आप। तो नई कंपनीज जो आई हैं मेजरली, सर आपने जो पूछा, केबल्स में है। वायर एंड केबल्स बहुत बड़ा फील्ड है। डोर्स एंड विंडोज में है। जो हमारे बॉम्बे में हम लोग रहते हैं, गणपति आता है तो 2 बजे तक हम सब घर के अंदर ही नाच रहे होते हैं, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, बाहर से सोने को नहीं मिलता, सब लोग स्ट्रीट पे होते हैं। पीवीसी के जो विंडोज एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो फायर रेजिस्टेंट है, ऊपर से पूरे साउंड प्रूफ होते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आप लोग देखिए, आपके जो जब आप अपने घरों में देखेंगे, पता नहीं आपके जो बिल्डर्स हैं, आप पूछिएगा कि विंडोज आप उनकी सब पीवीसी की होती है। आप हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं, जितने आपके कैथार्टिक हैं, ब्लड बैग्स हैं, जो अपना वो लगता है ना कैथार्टिक, अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो सब पीवीसी का है। आपका जो वो आपका जब कोविड हुआ था, पीवीसी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिमांड आया था 2 लाख, ये जो आपका इंटरवोवन का बनता है ना, जो सब लोगों ने यूज किया था। और जितना आपका वो कर्टन्स बनते हैं, आपने देखा है जो जब कवर करते हैं, जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना होता है, वो सब पीवीसी का होता है। अम्ब्रेलाज होते हैं आपके, वो पीवीसी के हैं। जूते आपके सब पीवीसी के होते हैं। तो रोजमर्रा में पीवीसी बहुत यूज होता है, हम लोग को मालूम नहीं चलता कि वो लेदर अभी आजकल कोई यूज नहीं करता है। लेदर में इतना प्रॉब्लम्स होता है शूज के लिए। सब इंडिया का इतना ज्यादा पोटेंशियल है। आपको मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगी। ये जो कंपनी सब कर रही है ना, आप यहाँ पर बहुत लोगों को देखेंगे जो पीवीसी इंडस्ट्री से है ही नहीं। अगर मैं नाम भी दे सकती हूँ आपको, ये आपका अ, राजू राजू कंपनी है, मेरे को आगे आगे दिखे तो मुझे मालूम है। यहाँ पर वो लोग ये देखने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है लेटेस्ट पीवीसी में, और आप पिछले अगले 3 महीने में देखेंगे वो अपनी फैक्ट्री डाल लेते हैं, बिकॉज इसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, जो इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो बहुत कंपनीज का यहाँ पर तालमेल होता है, अपना टेक्नोलॉजी बाय करते हैं लोग, अपनी जॉइंट वेंचर करते हैं, क्योंकि इतने फॉरनर्स आते हैं। आपने देखा कितने फॉरनर्स हैं, ताइवान से आए हैं, चाइना से आए हैं, जापान से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, सब जगह से आते हैं। उनसे ये प्री मीटिंग, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर जैसे आप हमारे आ रहे हैं विनाइल इंडिया में, इतनी दूर से आ रहे हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है इंडिया में सब इंडियन के सब सीईओ से मिलने को, इधर जाना, बैंगलोर जाना, दिल्ली जाना, कितना वास्ट है हमारा कंट्री। हमने एक सॉफ्टवेयर यहाँ रखा होता है कि पहले से अगर आपने इनसे मिलना है, आपका पूरा डिटेल सॉफ्टवेयर पे आ जाता है। पहले से आप प्लान कर लेते हैं, मीटिंग डाल देते हैं कि मुझे आपको विनाइल इंडिया पे मिलना है। उनका कितना टाइम कितना सेव हो जाता है, और बहुत बिजनेस डील्स होती हैं विनाइल इंडिया में। हमें भी रॉयल्टी मांगनी चाहिए, अगली बार से मांगेंगे, हम मांगते नहीं अभी। छोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे
ये आपने बहुत अच्छा बात बोली, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में ही करते हैं। हमारा ये थोड़ा ड्रॉबैक मांग सकते हैं आप। हमें छोटी सिटीज़ में भी विनाइल इंडिया को लेके जाना चाहिए। ऐसा इच्छा तो है, बैंडविड्थ थोड़ी बढ़ा के हमें छोटी सिटीज़ में जाना चाहिए। ऐसा आपका थैंक यू फॉर दैट आइडिया। हमें करना चाहिए, अभी हमने हम करेंगे, वी शुड डू दैट। क्योंकि छोटा-छोटा वर्टिकल अगर सब इतने बड़े लोगों को थोड़े भी चले जाएँ, तो सबको इतना पता चले कि आजकल कौन-सा ऐसा वर्टिकल है जिसमें इतनी ग्रोथ है, आप देखिए। ये हाँ ग्रोथ है, तो हमें लोगों को मालूम नहीं है। तो शायद हमारी तरफ से ये थोड़ी भूल है, हमें करेंगे, हम इसको सुधारेंगे। विल टेक इट, फिर आपको उधर बुलाएँगे, इंदौर और भी शिमला से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ भी चालू करते हैं ये। ऑनलाइन में ना साहब, मैं ना बहुत ऑनलाइन का फ़ेवर में नहीं हूँ। मैं मतलब जब हमारा कोविड भी हुआ था ना, तो हमने 2.5 साल तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टीम हमारी बाय गॉड्स ग्रेस हमने सब मेंटेन करी। हमने नहीं करी क्योंकि मेरा समहाउ मेरी ये फीलिंग है कि जो ऑनलाइन में होता है ना, वो ऐसे भी यूट्यूब पे मिल जाता है। ऑनलाइन में मैं क्यों बैठ बैठ के सुनूँ किसी को? वैसे ही मैं यहाँ होता है, बंदे को बात करने का बात होता है, आप Q&A करते हैं, अभी आप देखेंगे Q&A होंगे, एक-दूसरे से सब लोग मिलते हैं, वार्तालाप होता है, विचार-विमर्श होता है, वो होता है सर मीटिंग। वो ऑनलाइन में सर मैं उसके, जबकि हमने हमने कोविड के टाइम पे हमने कुछ और किया था, वो मैं आपको हम आपको यूट्यूब का चैनल देंगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, पर वो ऐसा नहीं था कि आपको बैठ के सुनने का है, वो हमने आपका रिकॉर्ड किया और आपको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई पैसे नहीं, आपका जब मन करे आप उसको सुनो, उसमें बहुत ज्ञान था। वो हमने कोविड में किया था, क्योंकि हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था। पर वर्चुअल में सर मेरा विश्वास नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं उसमें मानती नहीं हूँ, और जो हम मानते नहीं वो हम करते नहीं। तो 2.5 साल तक हमने कोविड में बिना किसी रेवेन्यू के चलाया वो वाला। और बट हम सिटीज़ में जाके ऐसे ही करेंगे, 2 दिन का नहीं करेंगे, 1 दिन का कर लेंगे, सुबह से शाम तक, ताकि लोगों को ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े, थोड़ा मतलब वो खर्चा भी निकल जाता है, करेंगे तो सर। आपकी जो जर्नी रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल जो मेंटरशिप है, उसका कितना बड़ा रोल रहा है? सर मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ एनआईटी से। पॉलीमर प्लास्टिक का मेरे को पी नहीं पता है, अभी थोड़ा बहुत पता होगा, पहले तो बिल्कुल नहीं मालूम है। एमबीए हूँ मार्केटिंग में, लेकिन मैं रिलायंस में बहुत साल रही हूँ, 9 साल, और मैंने मुकेश भाई के साथ, और मैं आई बीन इन द कॉर्पोरेट एज अ जीएम फॉर कॉर्पोरेट। और एक कंपनी थी मैक्स मोबाइल, वो मोबाइल करती थी, वहाँ की मैं सीईओ थी। तो एक अपॉर्चुनिटी आई, विनाइल इंडिया की ही अपॉर्चुनिटी आई थी 2010 में। हमें लगा कि एक इंडिया का ग्रोथ यहाँ पर है, डिमांड यहाँ पर है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जो सब लोगों को ऐसा डाल पड़े कि इंडिया, बाय गॉड्स ग्रेस हमारी तीनों कॉन्फ्रेंसेज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेज है। आपको मतलब दे आर बाय गॉड्स ग्रेस, हमारा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेज इंडिया की, तो वी बीन एबल टू ब्रिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सब फॉरनर्स यहाँ पर आते हैं, कितना बिजनेस होता है आप समझिए। और सर फॉरनर्स ना इंडिया में आएंगे नहीं अगर उनका धंधे का उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई नहीं आएगा अपना काम छोड़ के। उनको यहाँ पर वैल्यू मिलती है। कहाँ ग्रोथ? जर्मनी में ग्रोथ नहीं है, यूरोप में डी ग्रोथ है सर, वहाँ बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है। जापान में डी ग्रोथ है, चाइना में ओवर कैपेसिटी है, वहाँ पर वन चाइल्ड प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर डिमांड ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी है वहाँ पर, वो सारा माल उठा के कंट्रीज में भेज देते हैं लो रेट पे। इंडिया ही ऐसी जगह बची है अभी मेरे हिसाब से जहाँ पर ग्रोथ है। और बाय गॉड्स ग्रेस ये प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है बिल्कुल, तो तभी इतने फॉरनर्स आते हैं, क्योंकि और हमारे इंडियंस को बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। तो यूरोप की टेक्नोलॉजी है ना सर, जो मशीनरी होती है ना, चाइना की मशीनरी, आई एम सो सॉरी टू से, हमारे चाइना के बहुत लोग हैं, स्पीकर्स भी हैं चाइना की, बट मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन यूरोप की मशीनरी उनकी उनका कोई मेल नहीं है। हमारी इंडियन कंपनीज भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जर्मन और यूरोपियन कंट्रीज की मशीनरी बहुत अच्छी है। तो हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, वो सब लोग आते हैं, अभी वहाँ पर ग्रोथ है, उनको इंडिया में बेचना है, हमारे यहाँ पर लोग रेडी हैं। आपको मालूम है हमारे धंधे में कोई सब एकदम गुजराती है, हमारी मारवाड़ी है, हमारी इंडस्ट्री में धंधा उनको एवन आता है बिल्कुल करना, बहुत अच्छा डील हो जाता है। एवरीवन, हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है इस विनाइल इंडिया के यहाँ से, और इंडिया में लाने के लिए यहाँ पर सेठ लोग बैठे हैं, वो उनका वो हो जाता है और वो इंडिया में आ जाता है, तभी तो नई कंपनीज आती है। भाई हमने सर ये ना 15 साल का जर्नी है, आपने पूछा ना 15 साल का, इसको ना सॉरी टू से दिस वर्ड, बट इसमें बहुत मेहनत लगती है। लोगों को लगता है कि क्या है, लोगों को बुला लिया स्पीकर, लोग आ गए, इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट स्पीकर का वर्टिकल क्या है, कौन सबसे दुनिया में सबसे लेटेस्ट क्या चीज़ आई है, वो हम कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ पर लेके आए। हम नॉर्मली हमारे पास 100 रिक्वेस्ट आती है, हम 2 लेते हैं सर, हम लोग नहीं लेते, क्योंकि वो जो सबको पता है उसको क्यों लेने का है। हम यहाँ पर जो पब्लिश करते हैं वो लेते हैं,
जो कहीं पर किसी को ना मिले, तभी आ इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्या फ्यूचर देखते हैं इसका ये इंडस्ट्री? बहुत ब्राइट है सर। 10% 11% ग्रोथ कौन सी इंडस्ट्री में है ही नहीं। सब जगह तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए आप सर, इंडिया में ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ग्रोथ है। रोड्स है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, हॉस्पिटल्स है, डेटा सेंटर है, सब जगह तो पीवीसी है। हर जगह पीवीसी है, बहुत ब्राइट है सर। किसी को आपके कोई जानने वाले हो जो बोलते हैं कि हमें कोई नई इंडस्ट्री में जाना, तो आप पीवीसी बोलिए, बिकॉज इसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग भी थोड़ा साइड पर करिए एक बार किसी के साथ डील करके, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम। नहीं, एंड आई एम सो थैंकफुल सर, आपने एक नॉन ग्लैमरस इंडस्ट्री को कवर किया, बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है ये। आपने देखा इतनी, कैसे बोलूं आपको, एक इसको हम सेलिब्रेशन बोलते हैं पीवीसी, मतलब सब जैसे है कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के, सब कॉम्पिटिटर्स रहेंगे ना, एक ही चीज बनाएंगे, पर सब एकदम भाईचारा के साथ काम करते हैं। एवरीवन विल बी टुगेदर, आपको देखेंगे तो एक अलग तरीके का है ये, और ये बाहर नहीं जाता, लोगों को मालूम होता है, यही मिलेगा।